हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू CivTech सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इंजीनियर इमरान अजीज है और मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टॉप 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चन नंबर 151 से 160 तक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ये एक प्रेजेंटेशन के थ्रू हम आपसे शेयर करने वाले हैं शॉर्टली। इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिए ताकि आपको गेट एग्जाम की प्रिपरेशन या यूनिवर्सिटी टेस्ट के लिए हेल्प आउट करे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और CivTech सिंप्लीफाइड को जरूर सब्सक्राइब करें। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जहां पे एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आपके साथ फर्दर ये 10 क्वेश्चंस शेयर किए जाएंगे। सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पार्ट 8 में आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 सिविल इंजीनियरिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 151 सेज दैट इन वॉच द स्प्रिंग इज यूज्ड टू स्टोर स्ट्रेन एनर्जी। दिस एनर्जी इज रिलीज्ड। Option A, to stop the watch. B, to run the watch. Change the time. Option D, all of the above. स्प्रिंग जो वॉचेस के अंदर लगा होता है उसमें एक स्ट्रेन एनर्जी होती है और उसी एनर्जी से वो रन कर रही होती है। उसके ऊपर मिनट डायल, सेकंड डायल और आवर्स डायल, जितने भी उसके ऊपर डायल्स हैं वो इसी स्प्रिंग की मदद से और इस स्प्रिंग के अंदर मौजूद स्ट्रेन एनर्जी की मदद से रनिंग करते हैं। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, टू रन द वॉच। 152, a spring used to absorb shocks and vibrations is option A, conical spring. B, torsion spring. C, leaf spring. D, disc spring. That is called leaf spring. ऐसा spring जो शॉक्स या वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करता है। फॉर एग्जांपल इन व्हीकल्स या कोई हैवी मशीनरी के नीचे आपने ऑब्जर्व किया होगा, इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर कुछ स्प्रिंग्स होते हैं जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। सो उनको कहा जाता है लीफ स्प्रिंग। 153, द लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट डिफ्लेक्शन इन अ स्प्रिंग इज कॉल्ड। ऑप्शन ए, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी. ऑप्शन बी, टॉर्शनल रिजिडिटी. ऑप्शन सी, स्प्रिंग स्टिफनेस. ऑप्शन डी, यंग्स मॉडुलस. सो लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यूनिट deflection in a spring is called spring stiffness. So C is the correct option for this question. 154, in a leaf spring, वो spring जिसमें vibration वगैरह के लिए यूज होता है, तो कंट्रोल करने के लिए, in a leaf spring the length of all the leaves are equal. Option A true, option B false. So that is false. जरूरी नहीं कि तमाम leaves की length जो है वो equal हो. So B is the correct option for this question. 155, when a closely coiled helical spring is subjected to an axial load, it is said to be under option A, bending. Option B, shear. Option C, torsion. Option D, crushing. Closely coiled helical spring जो है उसमें torsion होती है जब axial load इसके ऊपर apply हो. So C is the correct option for this question. 156, the stiffness of a closely coiled helical spring is dash proportional to number of turns. Option A, directly proportional. Option B, inversely proportional. So that is inversely proportional to the number of turns. उसके अंदर जितने टर्न ज्यादा होंगे सो स्टिफनेस उसमें उतनी कम होगी. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. 157, a closely coiled helical spring is cut into two halves. The stiffness of resulting spring will be option A same, option B double, option C half, option D 1/4. So जब हाफ के ऊपर कट जाएगा तो ऑफ कोर्स उसकी लीव्स कम हो जाएंगे या हाफ हो जाएंगे, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो दैट इज डबल. बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसकी स्टिफनेस और इसकी जो लीव्स हैं उसकी तादाद के साथ. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. 158, the rivets are made from ductile material. Option A yes, option B is no. So yes is the correct answer for this question. Rivets जो हैं वो ductile material से मिलके बनते हैं. So A is the correct option for this question. 159, for riveting the size of hole drilled in plate is dash shank diameter of rivet. Option A equals to, option B less than, option C greater than. So here B is the correct option. For riveting the size of hole drilled in plate is dash shank diameter of rivet. Shank diameter of rivet से ये less than होगा. 160, for a 25 mm hole drilled in a plate, the diameter of rivet shank should be option A 23 mm, option B 24.5 mm, C 25 mm, D 26 mm. तो इसका डायमीटर A is the correct option, 23 mm होना चाहिए. So friends, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करे आउट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल इंजीनियरिंग का. आई होप आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होगी. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स और सर्कल में इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर्स को ये हेल्प आउट करे. मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे हम फर्दर 10 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे. Till then, thank you very much and have a good day.